हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैनपिट ओडिशा। सो पिलाने आमे कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास करथले सीएमए इंटर रो जो थरे कि हमर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चलथिला पिला माने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रो लास्ट क्वेश्चन जोडा कि इलस्ट्रेशन नंबर 23 आज हमें करिबा जो थरे कि गोटे नुवा कांसेप्ट अछि जो कांसेप्ट को हमें कहउचे पिलाने एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन क्लॉज केमिति अप्लाई होची हमें ए क्वेश्चन रे देखिया पिलाने ए क्वेश्चन टा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे वेरी वेरी इंपोर्टेंट और कांसेप्ट रे भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, तो पिलाने एस्केलेशन क्लॉज माने मु कोन कहितली मु जेतलो तुमको थ्योरी पढैतली से टाइम रे कहितली पिलाने escalation clause is a clause contained in the contract agreement which states that when the price of input, that means material and labor, will increase, then accordingly the contract price also will increase. ओडिया रे कह गले जदि आमर इनपुट रो प्राइस बढ़ी गला, जदि आमर इनपुट रो प्राइस बढ़ी गला अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ी जिवो। पिलाने आमे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नै थिबा 5 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष 20 वर्ष पय बड़ बड़ डैम ओवर ब्रिज, ठीक अछि, जदि से सब करियार कॉन्ट्रैक्ट नै थिया पिला माने ताहले कोन हबो ना आमर जो रो मटेरियल जिंदि कि आमर रो मटेरियल वेजेस ए सब रो खर्च गुडा कोन जो धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी पळेबो, ता रेट बढ़ी जिवो। ता माने आमे जेति की कोटेशन जेथिबा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पय सी पैसा रो काम हेई पारिबो नाही। जो हम गोटे एस्केलेशन क्लॉज रखिबा जदि आमर फ्यूचर रे इनपुट माने रो मटेरियल आ वेजेस रो कॉस्ट बढ़ी जाए सेही हमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बढ़ाउ पड़िबो, अधिका पैसा दବାକୁ पड़िबो। से क्लॉज को हमें कहउचे कोन एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज केमिति वर्क आउट होउची सेटा पे हमें ए क्वेश्चन रे देखिबा, सेति में क्वेश्चन होउची वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो पिला माने ड्यूरेट लिमिटेड अंडर टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख माने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होउची 5 लाख काम करूची ऑन 5 जुलाई 2021 on 30 June 2020 when the contracts were closed the following details of the contract were gathered। ता माने पिला ने 1 जुलाई 2021 रे कॉन्ट्रैक्ट काम स्टार्ट कला, ठीक 1 ईयर पर 30 जून 2022 रे से कोन करा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कला, माने 1 ईयर प्रॉफिट लॉस जाने पे से चाहियो पिला माने, ठीक अछि, जो थरी कि से हम कोन कहला कि हम गोटे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करियर अछि, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन दबार अछि। एबे जो ए टेबल देला पिला ने ए टेबल रे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस आ कोन बड़ खाला से सब इन्फॉर्मेशन हमको देइछि। एबे हम टिके डिटेल थिया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कोन देइछि। द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन एस्केलेटर क्लॉज व्हिच रीड एज फॉलो। ए क्वेश्चन रे एस्केलेटर क्लॉज अछि जो के हम देखिबा। देखो, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल rates of wages increase by more than 5%, the contract price would be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case। ए दी लाइन रो मीनिंग जदि तुम बुझियो पिलाने ताहले तुमको क्वेश्चन करला वेरी वेरी इजी होबो। से कहउची हमर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस केते अछि 5 लाख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस केते अछि पिलाने 5 लाख। से कहउची एई 5 लाख रो जदि अप टू 5% बढ़िबो प्राइस, जदि इनपुट अप टू 5% बढ़िबो ताहले एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल होबनी, एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल। किंतु बियॉन्ड 5% जदि बढ़िबो, जदि बियॉन्ड 5% बढ़िबो ताहले एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल होबो, एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल होबो। बुझा पड़ला जो पिलाने आउ थरे कहउची ए जो क्वेश्चन रे गोटे एस्केलेशन क्लॉज अछि, एस्केलेशन क्लॉज कहउची जदि हमर रो मटेरियल आ वेजेस रो रेट 5% रु अधिका बढ़ी जिवो ताहले 5% रु जेति की एक्स्ट्रा बढ़ला ता ऊपर एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल होबो, अप टू 5% एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल होबो नाही। एति तो बुझिलो। से कहउची इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस रेट इंक्रीज बाय 25%। केते पड़ा कहउची देखो पिलाने से कहउची आमे काम करबे एस्केलेशन क्लॉज फर्स्ट कर दा पिलाने वर्किंग नोट रे, तापर टेबल ऑटोमेटिक हे जिवो। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लॉज, कैलकुलेशन ऑफ एस्केलेशन क्लॉज, ठीक अछि। एस्केलेशन क्लॉज से कोन कहला प्राइस ऑफ raw material and wages is increased by केते परसेंट रे 25%। क्वेश्चन कहला केते परसेंट बढ़ी जोली कहला रे 25%।
तो मु एडी कोड से लिखिबी एस्केलेशन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल केतरे इज इक्वल टू 5% अप टू 5% नाही कायना से कोजे बियॉन्ड 5 लेके एप्लीकेशन एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल तो मु लिखि दिबी देयरफॉर एस्केलेशन क्लॉज इज एप्लीकेबल केते परसेंट रे फॉर 25% माइनस 5% इज इक्वल टू 20% ता माने केते पे एप्लीकेबल हे जो केवल 20% पे एप्लीकेबल हो ठीक अछि तो एडी मु गोटे काम करी रो मटेरियल कॉस्ट काढिया हला रो मटेरियल केते देखो देखो पिला माने रो मटेरियल केते अछि एडी 1 लाख ठीक अछि तापर वेजेस पेड जनरल एक्सपेंसेस प्लांट परचेज मटेरियल हैंड माने कोन क्लोजिंग मटेरियल देखो माने क्लोजिंग मटेरियल हैंड एडा होची क्लोजिंग मटेरियल ता माने एडा कोन हेछि बळका हेछि कोन हेछि बळका हेछि वेजेस एक्लूड तापर कहला लॉस सर्टिफाइड केस रिसीव्ड डेप्रिसिएशन प्लांट वेजेस कोड माने 45000 ऑफ वेजेस पेमेंट हेछि आ वेजेस आउटस्टैंडिंग के अछि माने 5000 ठीक अछि ता माने एबे मोर रो मटेरियल कॉस्ट केते जानत पिला माने रो में कॉस्ट होची मु 1 लाख रो पठिली केते रो मटेरियल पठिली पिला माने 1 लाख रो मटेरियल पठिली माइनस सेथि मोर बळी गला केते क्लोजिंग स्टॉक 25000 ता माने रो मटेरियल कॉस्ट केते हे गला 75000 रो मटेरियल कॉस्ट केते गेला 75000 वेजेस केते पिला माने ना वेजेस मु पेमेंट करथिली 45000 प्लस आउटस्टैंडिंग केते 5000 आउटस्टैंडिंग अछि केते 5000 ता माने वेजेस टोटल केते गेला 50000 केते गेला वेजेस 50000 मो सहित पिला ने स्पीड लेखो therefore total material and wages cost is equal केते पिला माने 75000 होची मटेरियल कॉस्ट प्लस 50000 होची वेज कॉस्ट मिसी केते हेला 1,25,000 मिसी केते हेला पिला ने 1,25,000 क्लियर ता हमरो टोटल 1,25,000 खर्च हेला तो पिला ने एबे कोन कहबी एडी कहछि कि रो मटेरियल एंड वेज प्राइस इंक्रीज रे केते कहछि 25% केते कहछि रे 25% एति लिखिलो रो मटेरियल एंड वेज रेट इंक्रीज केते कहछि इज इक्वल टू 25% let the raw material speed lekha and wage before increase is equal to 100% before increase kete re 100% increase kete la 25% therefore after increase kete 125% therefore 125% is equal to केते इज रे बढ़ी की 1,25,000 रो मटेरियल आ वेजेस केते जे 1,25% केते परसेंट इक्वल टू 25% इक्वल टू therefore 1% इक्वल टू केते 1,25,000 divided by 125 therefore cost before increase is that is 100% is equal to 1,25,000 divided by 125 into 100 is equal to 1 lakh is equal to 1 lakh स्पीड लेखो जदी लिखि पानो स्क्रीनशॉट नि स्पीड माने हमें एडी जानले कि रो मटेरियल लिखि 25% का ओरिजिनल प्राइस केता था 1 लाख था क्लियर तो पिला ने therefore escalation clause is applicable
केते परसेंट रे दैट इज 20%। आमे काढी छै ना पूरे 20% एप्लीकेबल हो बोली डी काढ छै ना एडी that is 20% of cost 20% of cost is equal to लक्षे रो 20% लक्षे रो 20% केते पिला माने is equal to 20000 ता माने 20000 कोन एप्लीकेबल हबो एस्केलेशन क्लॉज एप्लीकेबल हबो हैला से एस्केलेशन क्लॉज as per मुजिन लेको escalation clause if the price of raw material and wages increased beyond 5%, then the contract price will increase by 25%। कोई जना क्वेश्चन एटा ता माने therefore escalation clause amount is equal to 20000 रो 25% is equal to केते 5000 is equal to 5000 ता माने मु आउ थरे कहि दो जे पिलाने टिके मो कथा टिके सुनो प्रथम रे आमे बाहर करले कि रो मटेरियल आउ वेजेस रो केते खर्च हेची रो मटेरियल रो लक्षे टा किनिथिले ताइरो 25000 बळ काइले 75000 टिके मन दे सुनियो पिलाने 75000 तापर वेजेस 45 देइचे 5 आउटस्टैंडिंग अछि 50000 एबे आमे देखिले मटेरियल वेजेस मिसी लक्षे 25000 टा हमर खर्च हेची ठीक अछि ता माने से क्वेश्चन कहै कि रो मटेरियल आउ वेजेस रो प्राइस 25% बढ़ी जाइछि जदि ओरिजिनल 100 थिला बढ़िला 25 ता माने बढ़ला पर केते हैला 125 एबे 125 के समान जदि लक्षे 25000 ताले 1 को लक्षे 25000 बाय 125 तो 100% समान केते इनटू 100 ता माने ओरिजिनल कॉस्ट 100 ओरिजिनल कॉस्ट जदि 100 हैला फास्ट में काटचे कि अप टू 5% एप्लीकेबल नहीं एस्केलेशन क्लॉज 5% पर का एप्लीकेबल कने बियॉन्ड 5% कहैछि सित में 25% बढ़छि 5% एप्लीकेबल नहीं सित में 5 आउट 20% एप्लीकेबल ता माने लक्षे रो 20% माने 20000 ऊपर का हमर एप्लीकेबल हो कोन एस्केलेशन क्लॉज ता माने केते परसेंट एस्केलेशन क्लॉज हम दोचे 25% ता माने जदि हमर 20000 बढ़िछि कॉस्ट ता माने तार 20% 25% माने केते 5000 एडी हम बुझिल कि एस्केलेशन क्लॉज हमर केते पळासला 5000 पळासला ता पर पिलाने क्वेश्चन ता वेरी वेरी इजी एस्केलेशन क्लॉज 5000 पळाले किछि नाही क्वेश्चन रे किंतु जेहेतु मु क्वेश्चन स्टार्ट करले पिलाने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करताको चाहंती बाकी तो आराम से करि पारे बेले स्टिल मु तो मोटी हेल्प चाहूँ वर्षा कहलु रे कौन सब खर्च अच्छी पर्टिकुलर अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड फर्स्ट रो मटेरियल 1 लाख वेजेस 45000 ताकू लागी का पके दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000 तापर गुटे गुटे आ कोन खर्च जनरल एक्सपेंसेस 10000 प्लांट परचेज पड़िबनी प्लांट और डेप्रिसिएशन पड़िबो हां डेफिनेट अछि कि देछि डेप्रिसिएशन 5000 सल्ला बाय क्लोजिंग मटेरियल 25000 अब क्लोजिंग नहीं बाय वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन देछि केते 2 लाख सेथि मिसेबो एड एस्केलेशन क्लॉज कर दबो 5000 मिसी के हिजिबो 2 लाख 5000 कोन पैना एस्केलेशन क्लॉज ता हमर तू आगु होची कॉन्ट्रैक्ट रे थाउची सेहि पई एस्केलेशन क्लॉज ता भी सर्टिफाइड 2 लाख 5000 हैला तापरे वर्क अनसर्टिफाइड केते 15000 सल्ला ना टोटल कॉस्ट केते आछि
2,45,000 2,45,000 2,45,000 ओके तो माने टू नोशनल प्रॉफिट केता आसी रे नोशनल प्रॉफिट केते 80,000 बाई नोशनल प्रॉफिट केते 80,000 ओके पिलाने सेतरु किछि टू पीएल को जीवो टू रिजर्व को जीवो तो पीएल को जे टाइम रे हम कोन परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट काढिबा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट इज इक्वल टू फार्मूला होची वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 वर्क सर्टिफाइड 2 लाख हमको क्वेश्चन रे देछि पिला माने डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख इनटू 100 माने केते आछी रे 40% आछी रे therefore profit to be recognized is equal to 1/3 into notional profit into cash received by work certified is equal to 1/3 into notional profit asile 80,000 रे into 1,50,000 by 2,50,000 is equal to 20,000 sorry 2 lakh by 2 lakh sorry 2 lakh is equal to 20,000 ता माने पीएल को गला 20,000 आ बाकीटा पिला के 60,000 हमर रिजर्व रहबो क्लियर पिला माने पिला टिके नोट करो एठो नाइ कली स्क्रीनशॉट नै जो स्पीड रे ओके पिला माने सो पिला ने या सहित हमर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हे गला आज रो क्लास एति थौ पिला ने नेक्स्ट क्लास रे हमें करबा प्रोसेस कॉस्टिंग थैंक यू वेरी मच जदि पिला ने हम क्लास भल लाउची ताहाले पिला ने हम वीडियो को लाइक करो शेयर करो पिला ने संग साथी मान सहित आ सब्सक्राइब करो हम चैनल को ताकि फ्यूचर रे और अधिक अपडेट पाई परियो थैंक यू वेरी मच।